तो मैं आ गया वापस। इधर के साबिर भाई आप खैरियत से हैं? कुछ प्रॉब्लम की वजह से साबिर भाई का चैलेंज थोड़ा था स्टॉप किया गया था, लेकिन नो वरीज, साबिर भाई विल ऑलवेज give his best to show this world that how much he loves the cricket, how much he loves PAK America. So we wish the good luck to PAK America. क्या नाम आपका? साबिर भाई, ये गेम बहुत ज़रूरी है जीतना हमारे के लिए। बहुत मेहनत की है कैप्टन ने। वासिफ स्पोर्ट भी बहुत ही शौकीन रखते हैं क्रिकेट के। अच्छी बॉल लेफ्ट आर्म और राइट आर्म के साथ। हुनैन 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 का काम बनता है कि मारे, देखते हैं अभी मारे। तो हमारे से वो क्या कहते हैं, स्पीकर ले लिया गया शकीन। Probably given a promotion here, Amir. I've seen him bat in the middle. But he's come out with Abdullah so far. Very good hitter of the ball. Very good player. Has been around PAK American cricket for a long time. Nice shot. Good shot. Goes into the reach of the Baskar Yadram. Can score. 5 on the board. No 5 by Abdullah. सुबहानी गुजर साहब, और स्पीकर थोड़ी देर से दे दियो। Munir on strike. Here is Hamid Nawaz. चलो into the onside. They're gonna challenge the fielder. And in the end, a single, so 6 off the first over. यार क्या दुश्मनी पाली साढ़े नाल यार गुजर ने यार। ओए सईदा नाल यार छोड़ो यार। कोई करो ना, कोई पूरा करने के लिए कोई इंतजाम करो ना, मेहरबानी हो सी। स्पेशल शेर सुना सा की याद रखो गुजरात है। फिलहाल तो एक शेर है तुसा सदा वक्त एक जा नहीं रहंदा, कुछ गुजर गया कुछ गुजर जाएगा, आने वाला वक्त ही देखी जाएगी। ये शेर तो सुनाया कि मेहरबानी करो। अमाद अच्छा ही बॉलर। वासिफ स्पोर्ट्स की तरफ से दूसरा ओवर हमाद हुसैन को दिया गया। हमाद हुसैन की इस टूर्नामेंट में काफी कारकर्दगी नजर आई। केड़ा बंदा है जिसको स्पीकर है? दूसरे ओवर की पहली बॉल। हां केदे कोले माइक हो गया, स्पीकर हो गया, जो यार फड़ के ले आ यार, कोनी में बैटरी चार्ज करके देंगा यार। Yadram, a very good batsman, incredible batsman, fielding करते हुए। शाबाश है भाई, शाबाश शाबाश है भाई, टक्कर 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 हो गई उन्हें भाई दी अमाद नाल। और ये वाइट बॉल, अमाद इस टाइम घबराए हुए अमाद उन्हें के सामने। मेहरबानी करो लाला। So 7 on the board so far. Hamad Hussain given the ball, and Munir, he's on 1. Abdullah is on 5. Still asking 9.3. They need 177 to win. Another white. घबराते हुए एक और वाइट। आयो उन्नैन ना प्रेशर ही काफी है, उन्नैन का प्रेशर ही काफी है। यहाँ तक के शकीन ने बोला विकेट आ गई है, विकेट बड़े ही काबिल हैं विकेट लेने के लिए, ले सकते हैं कोई शक नहीं। अच्छे ही बॉलर लेफ्ट आर्म पेसर। Good delivery. They're gonna scamper through for 1. Well run from एक Abdullah. पानी बोतल हो। Back into strike. बहुत अच्छे तरीके से हुनैन मरीज ने बॉल को खेला।
हमाद हुसैन को बहुत गल एहतियात सुनो। से खेलना पड़ेगा पाक अमेरिका के बैट्समैन क्या गल स्पीकर की छपाता ने लगदा है जरा घबरा गया साड़ी गल्लां तो So they still need बड़ा ही प्यार। 175 from 113 balls. They're going at 7.7. They need 9.2 early stage. Yes, we've only seen we have parents here also enjoying second over in progress. with So their here kids is mashallah Hussain. आए अब्दुल्ला सुहावा आए अब्दुल्ला सुहावा आए अब्दुल्ला सुहावा आए अब्दुल्ला सुहावा और सोनी शॉट मारी जागता है ओए 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 डुस 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 फील्डर ने भी अच्छी कोशिश की पाक अमेरिका के लिए शब्द अब्दुल्ला तो ही तरक्की छोड़ शब्द अब्दुल्ला तो ही तरक्की छोड़ हा 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 Lenny. So 15 for no loss. Lovely strike from Abdullah. अच्छी यही क्रिकेट है एनु कहते हैं क्रिकेट छक्का सिंगल वाह हा 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 For no loss. वाह 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 वे अब्दुल्ला सुहावा ओ वाह वे अब्दुल्ला सुहावा बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट अब्दुल्ला सुहावा इस टाइम पाक अमेरिका के लिए ओपनिंग करते हुए खेली जा रही है वासिक स्पोर्ट्स के फील्डर्स की आइज गेंद पे है थैंक यू You want to drink water? Yeah. So ball chopped into the offside. प्यार के साथ Score. पानी So this over's gone for 10 so far. स्प्रिंग पोलैंड फ्रॉम साबिर भाई बड़ी PAK American प्यार करने वाले flying बड़ी to मोहब्बत करने वाले Wasik हर Sports. शख्सियत के साथ Of हर टीम के 183, साथ they're batting a 16 for no loss in the second over. अल्हम्दुलिल्लाह पानी 9.16 so fifth ball of the over अच्छी बॉलिंग और अच्छी बैटिंग के साथ उनैन 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 आपको इस बॉल पे एक अच्छा से शॉट मारना होगा For six, he's bowled really well in this over. But he's kept Hunan Munir extremely quiet. बड़ी आपको एक Just a couple of runs from him. 6 balls. He's उम्दा बात बताते हैं कि दोनों टीमों की तरफ से दो ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं अमाद और जिहाद दोनों भाई They need दोनों भाई का टक्कर 168 to win. उनके लिए ये फायदा कि जो भी जीतेगा एक न एक भाई ट्रॉफी लेके जाएगा that's the key to एजाद भाई कि ना थोड़ा सब भाई दो भाई खेल रहे हैं भाई जियाद एंड हमाद अलग टीमों के साथ दोनों का फायदा यह है हुसैन ब्रदर्स विल टेक अ ट्रॉफी इट डजंट मैटर हु विंस एंड आई विश गुड लक टू बोथ टीम्स बट आई एम अ सपोर्टर ऑफ पाक अमेरिका 17 for तो none. Munir is on 3, Abdullah is on 12. So 2 overs gone, 17 without loss. 185 का हदफ दिया गया वासिक स्पोर्ट्स की तरफ से पाक अमेरिका को we have some international players playing from both sides वसीम की तरफ से 81 स्कोर बनाए पाक अमेरिका के बल्लेबाजों का कहना है कि हम भी ठान के आए हैं हम भी दिखाएंगे जीत के दिखाएंगे अब्दुल्ला सुहावा आहा हा 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 आयो जातका सेंचुरी मारनी है दिखाते हुए Excellent आज commentary by Fizan. आज ये हमारे बड़े अच्छे बॉलर First और बहुत ही movement to अच्छी 6, very शख्सियत good over अली from him. जर फ्रॉम जर स्पोर्ट साइड पे Comes ओके in here Best with क्योंकि commentary, कैमरे में best हम नहीं आ सकते हैं Munir on strike, he's इसमें on 3. हाँ ठीक है तो थोड़ा पीछे ओके क्या ख्याल है क्या ख्याल है क्या ख्याल ये है कि अब्दुल्ला सुहा कुट के रख देगा उन्हैन को भी अब थोड़ा सा खबर पहुंचनी चाहिए कि वी हैव इनफ विकेट्स प्लीज गो फॉर इट no he will इंशाल्लाह नहीं 10 के भेजो ना मोहम्मद 10 की प्लीज भूल गया वी डोंट वांट अलार्म डार्ट्स ही इज वरीड अबाउट हिज विकेट रिक्वायर्ड रन रेट प्लीज उन्हैन भाई थोड़ा सा 9.36 चल जाएं आप मार सकते हैं मारेंगे अच्छी शॉटें मारते हैं आई नो यू ट्राइंग टू सेट योरसेल्फ अप 17 for none So they need 167 from 101. अच्छा 107 balls. कैमरामैन ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਾ ਹਾ 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 Still requiring over 9 and over. आया तेरी शॉट जागता सोनी शॉट में 4 रन वाह फील्डिंग जागता है फील्डिंग और वास्तव स्पोर्ट की तरफ सोनी फील्डिंग ओए ने आगे अच्छी फील्डिंग के साथ ओए शॉट खेली लेकिन ओनली अभी नाम को ये नजदीकी हुए ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ
ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਆਹਾ ਮੁਨੀਰ ਆਹਾ ਹਾ 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 So good looking shot from Hunan. Munir picks up a couple of runs. अब्दुल्ला साहब बड़े ही Well to keep the ball in place. Saved a couple of runs, and here is Hamid Nawaz. गिलानी Still पीर सैयद फिजान हुसैन शाह 165. गिलानी मां तेरी शॉट ते सोहनी फील्डिंग ते सिंगल रन ते आए स्ट्राइक पर अब्दुल्ला सुहावा बड़े रिलैक्स हुई थे खेलने वाले फोकस करी थे बड़ी मेहरबानी शकीन नहीं इंजॉय करते हुए आज अब्दुल्ला सुहावा ने पांजे भी इंजॉय करना है इंशाल्लाह अब्दुल्ला सुहावा एक अच्छी बैटिंग के साथ आज अच्छे स्कोर दिए जाएंगे बाकी परफॉर्मेंस अपनी जगह क्रिकेट अपनी जगह अच्छे बैट्समैन और अच्छे बॉलर भी नाकामयाब होते हैं किसी ऐसे दिन पे जहाँ पे उनका दिन भी नहीं होता लेकिन हमें यकीन है कि अब्दुल्ला सुहावा वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट हियर कम्स विद द हाईएस्ट रन विद अ ब्यूटीफुल सेंचुरी अगेंस्ट सुप्रीम किंग्स 117 रन्स आयो अब्दुल्ला सुहावा आयो थोड़ा स्टाइल बैटिंग ना आयो अपने आप की सेट करने वाले ओए डुस 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 अब्दुल्ला ने सीधे बल्ले से स्ट्रेट बड़े आराम से बॉल को खेला और एक स्कोर बनाने में कामयाब हुए हुनैन गल सुनो स्ट्राइक हाँ भाई ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਪੀਕਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੈ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਹੋਏਗਾ ਸਪੀਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਸੁਣ ਬਾਤ ਅੱਛਾ। ਉਂਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਐਸ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟਾਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ Very good one here from Hamid Nawaz. करो कुछ इंतजाम स्पीकर का First of all, went to क्योंकि हमें सुनाना है शाकीन भी यहाँ पे आए हैं कमेंट्री के लिए देखना चाहते हैं Oh, lofted into the गुड offside. गुड बैटिंग गुड बैटिंग गुड बैटिंग गुड बैटिंग बॉय गुड बैटिंग To his right. And the score goes up by 1 to 22. Abdullah Swawad. So still 162 to win, asking 9.4. They're going at 7.7. शाबाश 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 Over from Nawaz. He's only given away 5. Will come into bowl to Abdullah. Inshallah. Abdullah is on 13. कैमरा Oh, into the अच्छा offside. 6 रन के साथ लेकिन बाल रुक गई बाउंड्री के अंदर Already committed to signal 4, but it held up. कोई गल नहीं और बड़े छक्के आवंदे अगर बाल रुक गई तो कोई गल नहीं 23 for आउटफील्ड इज लिटिल स्लो अब्दुल्ला ने एक और बहुत बड़ा शॉट लगाया लेकिन खाली 2 स्कोर आया अंपायर 4 का इशारा देखते देखते रुक गए ये सारे इंडियन फील्डर की तरफ से इशारा कि ओनली 2 स्कोर Yeah, I looked सारे at the mix region हैं, of दो ही टीमें umpire Brooks, पाकिस्तानी। and I would have I had already put forward बस the Brooks. सारे आए एंजॉय करना लीग मैनेजमेंट है ना Yeah, but it plugged. हैं Maybe that's इंडियन because of 7 वेस्ट weeks इंडीज of सारे running मिक्स here. हैं मैनेजमेंट करने पे ना तो बड़ा Right है here. किड़े 23 वेस्ट इंडीज for the last कमेंटेटर 3 अच्छे overs कमेंटेटर हैं लेनी अच्छे कमेंटेटर हैं नहीं मैं वेस्ट इंडीज ने बहरहाल उमैद अच्छी कमेंट्री करना हाँ अच्छी कमेंटेटर मैं इस्लाम की था नहीं बस वो बेचारा अब्दुल्ला से परेशान है नेशनल कमेंट्री नहीं करना चाहिए बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं 326 स्कोर इस टूर्नामेंट में एक ओनली 185 बॉल के और 176 बल्ला किसकी लफ्सी हो जो थपे है So Hamad Eh? Hussain will continue. वो जड़ा था बैट पे है First of all, went Follow for this one. 11. आया चकता डुस 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 अब्दुल्ला सुहावा आया चकता सोनी शॉट मारी आ ओए आया झटका सोनी शॉट मारी आ ओए आहा हा 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 ओ अब्दुल्ला सुहावा बड़ी सोनी चॉइस झटका इस तरह चाहिए जिस तरह की ना मिठे चावल इस तरह मारिस बाल गई के बल्ले आ हा लेग वाले पास है ओए सोनी शॉट मारी ओवर द काउ कॉर्नर ब्यूटीफुल शॉट बाय अब्दुल्ला सुहावा जिनका बड़ा प्यारा नाम अब्दुल्ला सईद जो हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त टूर्नामेंट में 22 छक्के और 27 चौकों से उनकी मदद से उन्होंने 326 स्कोर बनाए ये दसन नहीं पता उन्हें पता है ओए तेरा नहीं पड़ी So Abdullah, lovely shot. Such a powerful. not just a lovely shot it's just an incredible shot Down the leg side, and इंशाल्लाह उन खेल rather than allowing the ball to go through for a wide, Abdullah's taking it. शाला अब्दुल्ला तो के रख दे आहा आयो आयो बैट्समैन 10-9 for no loss. Good strike. अगर हाफ सेंचुरी हो जाए ना
250 ही है सर। Oh, अच्छी कमबैक, अच्छा कमबैक, अच्छा कमबैक, अमाद हुसैन का अच्छा कमबैक। यही बात मैं कर रहा था हमाद हुसैन के लिए कि उनको अपनी ये सलाहियत हद रखते पार हैं। करनी होगी, अपनी पेस दिखानी होगी, नहीं तो अब्दुल्ला के बल्ले से कोई नहीं बच पाता। so a couple of fielders outside of the 30-yard circle, a mid-wicket and a backward point. So those are the two fielders. Here is Hussein पाक अमेरिका ने बंदा चंगा रखा। again looking for a big shot, but it goes through to the keeper. अच्छी बॉल है। जलवा पाक अमेरिका दिखाया जा रहा है हमाद हुसैन की तरफ से। वेरी गुड बंदे। अच्छा बे तो को शुगर लाओ थोड़ी कमेंट्री करनी मां की, फिर तो सुना गप मारना मैं। थोड़ा ब्रेक लो ना, फिर सुना गप मारना ना। गुड कमबैक बाय हमाद हुसैन। Yeah, a couple of good करो ना, comeback ऊंचा ऊंचा balls बोलो। after being struck for ऊंचा a ऊंचा बोलो, 6. किया ना करो। He's come back for a dot हाँ, delivery. अच्छे commentator हो दो ये भरा। 155 needed from 99 balls. Amir still asking over 9 and over. They're going at 8.2. So आए अब्दुल्ला सुहावा, Abdullah's batted well so far. He's up. नहीं छोड़ना है जाकत, Munir. मारी तो ये रक्सी इस बॉलर की। Boys haven't given नहीं away छोड़ना, the नहीं ball. छोड़ना। Here is Hamad Hussein. नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। Abdullah, he picks up another 6. अब्दुल्ला का मार 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 ओवर 6 छक्के, मार मार ओवर 6 छक्के। सोनी शॉट चाहिए ओए ओए। One on the onside, one on the offside. Ahmad Hussein has gone for 12 in this over. And PAK America, they're off to a good start, 35. अच्छी शॉट, अच्छी शॉट। और That's a lovely drive straight down the ground from Abdullah. 4 more runs. हमाद की दाल नहीं गल रही और अब्दुल्ला का बल्ला चल रहा है। अब्दुल्ला का बल्ला पाक अमेरिका आए अब्दुल्ला, आए अब्दुल्ला। 10.17 और रिक्वायर्ड रन गिरता हुआ 8.97। खूबसूरत बैट्समैन। So 39 on the board. Abdullah has gone quickly up to 30. माशाल्लाह। We've seen an over with 16 runs सारे so तक लाइन far. और So जितने here, गैप here we हमारे go, बड़े a big अजीज start भाई। from PAK America. न्यूयॉर्क प्लेयर्स, Abdullah is on fire. He's up to 30. ओनर ऑफ न्यूयॉर्क Here's प्लेयर्स Hamad सैयद Hussein. कदीर हुसैन शाह गिलानी। And he's gone for another maximum. What a shot from Abdullah. क्या ही खूबसूरत बात खेली गई। अब्दुल्ला की तरफ हमाद हुसैन की बल गया पोला था छक्का खब्बे पासे 45 स्कोर बनाने च कामयाब हुई पाक अमेरिका। 8.69 पर पहुंची गया। सोनी शॉट अब्दुल्ला सोनी। सपोर्ट करने वास्ते मैसेच्यूसेट्स हुई उन्होंने फैन आए सैयद कदीर हुसैन शाह, नसीर शाह, जमील शाह, मुदस्सर शाह। पाक अमेरिका की सपोर्ट बढ़ाने वास्ते मैदान विच गला खराब कसा, गला ठीक करेगी इंसान। आज तो मैच है, जीत हार अपनी जगह, लेकिन एंजॉयमेंट आए अब्दुल्ला। लूज 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 सैयद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला स्वा वाह सोनी बैट्समैन एंड यूएस इंटरव्यू खेलेंगे और ऑल ओवर द वर्ल्ड। साबर न्यूयॉर्क की अमेरिका विच भी बड़ा अच्छा नाम है इनका क्रिकेट में। चैनल यूट्यूब पर चलाने और इन्होंने कमेंट्री भी असा सुनी था खुश हो सो और जिस तरह मैं तो के साना ये भी असा सान उर्दू विच इंग्लिश विच पंजाबी विच कमेंट्री कर सा। मिलने हैं ब्रेक बाद। फैजी भाई, ओ फैजी भाई मामूना कितना रन है? फैजी भाई, Thank you, मामूना कितना रन Danny है? and Amer, एक Sayyid मिनट बस। Amer. यहाँ तक के Thank you very पहला ओवर बहुत ही एक्सपेंसिव ओवर फ्रॉम अमाद हुसैन। much. Come अब्दुल्ला सोहावे ने 2 डाला, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे अच्छे ही बैट्समैन अब्दुल्ला सोहावा को उतारने के लिए। गुड बॉल और ये देखें बैट कीपरी के साथ। Alluring side Azim Haida. माशाल्लाह Get through माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। ये देखें 4 ओवर 45 रन, जिसमें अब्दुल्ला सोहावा ने बड़ा मैन रोल खेला। 36 रन 13 बॉलों में 2 चौके 4 छक्के। पहला ओवर में
अच्छी बॉलिंग के बाद दूसरे ओवर में बहुत ही मार खाई अमाद हुसैन ने, जिसमें 2 ओवर 33 रन 16.5 की इकॉनमी, लेकिन अच्छे ही सलाहियत रखने वाले हैं, गुड कमबैक करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्लेयर, दोनों का मुकाबला बॉल और बैट का मुकाबला है। 36 रन बना चुके हैं 13 बॉलों पे, 4 छक्के लगा चुके हैं अभी तक। देखते हैं बास्कर यादराम भी एक अच्छे ही बॉलर हैं, अंडर 19 खेले हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से। शाबा अब्दुल्ला, शाबा, ठीक है अब्दुल्ला, आहा हा हा, टक्कर हुई अब्दुल्ला नी बाक्सर यादराम नाल। ओ ए हसी ना हुन चस हसी ने थे सुभानी गुज्जर साहब, ए गुज्जर साहब, ओ उठो तक्को शुगल, आज तम गेम पखी है इतना खेलना पे अब्दुल्ला सुहावा। आहा हा हा, कैसी है बैटिंग, चस आई बैटिंग नहीं। Because I play Master League and Yadram father played with us too, so you should play, laddie. इंशाल्लाह बनेगा वाले Early call from Unain Munir, a good call from Unain Munir. From Baskar Yadram, he's one of the best all-rounders around, a minor league player, a major league player as well for the LA Knight Riders, and has been part of numerous minor league franchises so far, the Empire State Titans, the Manhattan Yorkers, the New Jersey Stallions. He's a very decorated player around the USA scene is Baskar Yadram. Photo. बहुत ही अच्छे प्लेयर यादराम की बॉल अब्दुल्ला सुहावा को, आए अब्दुल्ला गया ही छक्का, छक्का गया ही, 4 रन से नहीं बाउंड्री से अंदर, लेकिन बड़ी कोशिश फील्डर की, अच्छी कोशिश के साथ कैच ड्रॉप, अच्छी कोशिश 50-50 चांस भी कह सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे काफी परेशान लग रहे हैं वासिस फुआ के डग आउट, और वहां तक के थोड़े रिलैक्स हैं। अब्दुल्ला सुहावा, आयो अब्दुल्ला, सोनी बैटिंग करना है वही जागत का। A couple of runs in the end from Abdullah Saeed, but the intent is still very evident to go after Baskar Yadram to keep the scoreboard moving along. 92 बॉलों पे 136 रन चाहिए हैं पाक अमेरिका को। सोनी खेड़ी या सोनी, अच्छी बॉल, अच्छी बैटिंग, अच्छा डिफेंड, हा इसकी आने अब्दुल्ला सुहावा। ओ उनैन भाई, थोड़ा सा आप ही अपना बैट को चलाएं। So 3 runs off this over from Baskar Yadram. 136 required from 91, 48 on the board for PAK America. इंशाल्लाह सेंचुरी मार से अब्दुल्ला सुहावा। Good way to close it out for Baskar Yadram. Just tap straight back to him. 3 runs from it. It's 48 without loss after 5. बहुत अच्छी बैटिंग अभी तक सैयद अब्दुल्ला ने की है। सैयद अब्दुल्ला और हुनैन पाक अमेरिका के ओपनर बैट्समैन अभी तक। जो पीछे बैट्समैन है अदनान अकमल, मोहम्मद खलील, अलीजा ज़ियाद, अच्छे प्लेयर है। कासिम यारा इधर जुनून में कैमरा लाया, थोड़ा जा इंट्रोड्यूस करा सारे की। अल्लाह चलो ठीक, अल्लाह मारो चिल ठीक, मारने का। बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट का ये फाइनल है, कॉमनवेल्थ लीग का ये प्रीमियर दोनों हैं। यहाँ तक के हम शकीन आपको बताते हैं, जो ये फाइनल हो रहा है हमारे बड़े ही प्यारे हैं, और इन दोनों में जो हमारे दिल की जान, वो आज चैंपियन मैच हो रहा है। हमारे प्यारे मामू जी नसीर हुसैन शास्त्राई से डाले, एक अच्छे ही मिस्त्री और हमारे वालिद साहब के बहुत ही प्यारे दोस्त, जिन्होंने सारी जिंदगी हमारे वालिद साहब के साथ गुजारी। माशाल्लाह अब्दुल्ला सुहावा को देखने के लिए शायकीन मैसेच्यूसेट्स और बॉस्टन से भी पहुंच गए हमारे बड़े भाई
सैयद कदीर हुसैन शाह गिलानी, जिन्होंने बड़ा ही प्यार से ना नहीं की, बड़ी खुशी से हाँ की। मैंने एक कॉल मारी बड़े भाई को, मैंने कहा हमारा अजीज़ दोस्त, हमारे इलाके का एक शान अब्दुल्ला स्वावा सैयद अब्दुल्ला जो बैटिंग करेंगे, और वो आए हैं। इन्होंने नानी की रातों रात हमारे पास पहुँचे, अच्छा ही डिनर किया हमारे साथ, और इस टाइम पहुँच गए हैं ग्राउंड में। थोड़ी देर तक उनके पास भी हम इंटरव्यू देंगे इंशाल्लाह। प्लेयरों में जोश और जज्बा है, जिस तरीके से आप पूरे लाइव जा रहे हैं मैचेस, तो इस तरीके से आप थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करें कि ज़्यादा लोगों को पता चले, उनके तक पहुंचे ये बात कि वहाँ बड़े बड़े अच्छे क्रिकेटर, क्योंकि यहाँ बहुत ही इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं। शाबा अब्दुल्ला स्वावा इस सवरा च जातका कुट्टी दा रखिया। आहा हा 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 आहा हा 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 आए उनैन, आए उनैन। वर्ल्ड कप भी हो रहा है, समझ गया ना सरदार? और सरदार समझ गया ना? क्रिकेट जा रही है। Singh into the attack. यादराम है बॉल रेडी वेल। Saw him in the field. Here he is now with the ball. 48 on the board, bowling to Hunan Munir. आ जात का तेरी शॉट गोली यार, गोली यार। Straight to the ते फील्डर भी खलता, single. ते फील्डर पोड़ी गए ते दित्ती स्ट्राइक अब्दुल्ला स्वावा की। या इस टाइम बड़ा ही गर्म है, अपनी एंकल You want anything? जड़ी इंजर हुई उसकी पुलित है, पाक अमेरिका से खेलना पिया। जो है ये इसकी आने क्रिकेट ते क्रिकेट ना शौक। टीम बनाई हुई मैं भी उसकी स्टोरी दसना कि मैं भी एक बार क्रिकेट खेलने स्लिप होया ते अंगूठा मारा गया कपया कंक्रीट पर छोड़ी मैं नहीं क्रिकेट, लगे 4 टांके फिर भी छोड़ी नहीं क्रिकेट। मैं आख्या मैं पूरा मैच कैसा खेडसा ते फिर जिते असा फाइनल। वी वन द फाइनल बैक इन 2016 अब्दुल्ला को New York Zalmi versus Brooklyn Strikers, and then we had a final with Desi hitters, and I still remember that game. I performed very well, alhamdulillah. Back in days at Marine Park, Brooklyn, PAK America. 2016, where our bowler was getting hit all over the ground, but I jumped in as a part-time 135 to win from bowler and 88 performed really well. degrees. And I still Pretty even contest. will never They were forget at that 9.1 match, over, alhamdulillah. 9.2. अच्छे ही बैट्समैन अब्दुल्ला स्वावा आया जागता ए जान मारी अब्दुल्ला स्वावा वही गया कैच, लेकिन नहीं 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 इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी कैच होना नहीं। अब्दुल्ला स्वावा ए लगनी बॉल तो गच्छे एर आउट ऑफ ग्राउंड उन दरख्तों ऊपर, लेकिन अब्दुल्ला स्वावा कोशिश पूरी करते हुए From Abdullah. Half chance off it there, but it brings up the 50 for PAK America. 50 up halfway through the 6th over. Abdullah's contributed 39 to that. Munir's on 8. आया मुनीर उनैन मुनीर मारी शॉट उनैन अमीर, लेकिन बॉल कनेक्ट नहीं हुई। जे भी कसनी कनेक्ट तो फिर रब ही जानना, रब ही जानना, बंदा जानना कुछ नहीं। Quiet over here again from the Wasik Sports. We saw a really good one from Baska Yadran, only conceding 3. This one from Chandi, only conceding 2. हमारे बच्चों का भी कॉल बहुत ही जबरदस्त फाइनल हो रहा है। इसमें बहुत क्रेडिट जाता है हमारे कमेंटेटर जो लैनी है और मैच माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त। जहां भी क्रिकेट होती है हम आपको भेजेंगे वीडियो, वो आप देखना चाहें YouTube को। जबरदस्त सीधा खेल हेलो मिड ऑफ YouTube, शॉट मिड ऑफ YouTube चल रही है। अच्छी फील्डिंग की। मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, एक लिंक भेज रहा फ्यूचर हूँ में उस कहीं पर भी बच्चे की लाइव मैच दसला। कमेंट्री के लिए चाहिए तो आप लैनी को कॉल हेलो। कर सकते हैं। लैनी माशाल्लाह पूरा अरेंज करते हैं, जिस तरह सलमान जो मैं भेज रहा हूँ फोटोग्राफर है लिंक, माशाल्लाह लाइव ये मैच भी ये पूरा माशाल्लाह सेटअप किया हुआ है और ज़बरदस्त फाइनल हो रहा है। कितने बजे तक मैच है तो मुझे बस थोड़ी सोनी शॉट मारी, सोनी शॉट मारी। So a good over again from Chandeep Singh. Wasik Sports. अच्छा ओवर, अच्छा ओवर चंदीप सिंह का। वाह 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 आया जात का 16 ओवर कटी दिता ही हुए अपनी टीम की। वासिक स्पोर्ट एक अच्छी ही टीम जो बड़ा बड़ा मुकाबला पाक अमेरिका, लेकिन पाक अमेरिका का नाम ही काफी है। वाह अच्छा ओवर करा के संदीप बहुत ही अच्छे, चंदीप ने बहुत अच्छा ओवर निकाला, अपनी टीम को थोड़ा सा अपने कैप्टन को रिलैक्स दिया। तो हमारे चंदीप एक बार वासिक स्पोर्ट्स के कैप्टन और सम प्लेयर्स कि किस तरह
इन दो ओपनर्स को रोकना है, मगर ये दोनों ओपनर बड़े गुस्से वाले हैं पाक अमेरिका के, और अमेरिका के बहुत ही अच्छे प्लेयर हुनैन मुनीर, जिन्होंने आज एक बाउंसर भी हेलमेट पे मारा है, मगर बदकिस्मती से यहाँ कोई भी वो नहीं था फिजियो जो आके चेक करता कि हेलमेट टूटा है कि नहीं। अली भाई होना चाहिए। इन फ्यूचर में हम अली भाई, इंशाल्लाह ज़रूर चेक करेंगे इस तरह के भाई पियो पियो हेलमेट को अगर बाल लगे तो जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में चेक किया जाता है उस तरह का कोई फिजियो हो और चेक करें। वासक स्पोर्ट्स के कैप्टन वासक बॉलिंग करने के लिए आए और सैयद अब्दुल्ला को बॉलिंग करेंगे, जो 39 रन पे खेल है। 20 बालों पे उन्होंने 39 रन बनाया। बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है सैयद अब्दुल्ला ने। 4 छक्के लगा चुके हैं अभी ब्रेक के बाद हम वापस, और अभी अब्दुल्ला स्वाब वापस। मुनीर भी बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अभी तक। 16 बालों पे 8 रन बनाया, मगर सही स्ट्रेटजी के साथ विकेट नहीं दे रहे। वासक अच्छे बॉलर, अच्छी बैटिंग के साथ सिंगल निकाला। बॉल चेक करते हुए अब्दुल्ला स्वावा ने धोने की तैयारी। बॉल होने से पहले शकीन हम आपको बताएं कि हमारे प्यारे चंदीप अच्छा ही बॉलर, अच्छा ही ओवर अपनी टीम को निकाल के दिया। ये देखें, ये देखें, ये देखें क्रिकेट, एक क्रिकेट हो रही है भाई। वाह 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 वाह, अब्दुल्ला स्वावा बैक ऑन स्ट्राइक। एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी आपने उन्होंने नट कस लिया अपने। बुलेट बुलेट शॉट। ऊपर से काफी लंबा छक्का स्विमिंग पूल के पास जाके गिरा है। सैयद अब्दुल्ला जो बहुत ही फेमस है बड़े बड़े छक्के लगाने में, उन्होंने फाइनल बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हुए 117 रन बनाए थे। वाह, आज भी अभी तक उन्होंने वाह वाह अब्दुल्ला, 4 रन चाहिए उन्हें 50 मुकम्मल करने में 22 गेंदों पे। जियो जियो जियो, एक और। सोनी शॉट, इसकी आने क्रिकेट, इसकी आने क्रिकेट, इसकी आने क्रिकेट। अब्दुल्ला स्वावा इसकी आने क्रिकेट, लंबा छक्का ते नाल ही सिंगल। सोनी स्ट्राइक रेट इसकी आने स्ट्राइक रेट्स ऑफ 350 इन 2 balls। शाकीन अब्दुल्ला स्वावा के भांजे अहमद और उबैद, ये देखे शॉट, ये देखे शॉट। लो जी अजीजो, अब्दुल्ला स्वावा बैटिंग करने से पहले असा दसने हो के उबैद अपने मामे की थकन उबैद थोड़े मामा बैटिंग करने पे जीतेगा, जीतेगा पाक अमेरिका जीतेगा। गुड लक टू बोथ टीम्स, बट गुड लक पाक अमेरिका स्पेशल। 5 छक्के लगा चुके हैं। अच्छा ही शॉट अब्दुल्ला का। स्कोर आ गया, मगर लगता है उन्हें पानी की जरूरत है और पानी दिया जाए। पाक अमेरिका के 2 प्लेयर भागते भागते पानी के लिए पहुंच चुके हैं ग्राउंड में, और पाक अमेरिका के प्लेयर्स या CCL की इंतजामिया से अपील की जाती है कि कोई भी वॉलंटियरली आके स्कोर चेंज करे, ताकि प्लेयरों को भी पता चलता रहे, सुनने के साथ साथ वो देखते भी रहें कि कितना स्कोर हो चुका है बोर्ड पे, क्योंकि यहाँ स्कोर बोर्ड भी लगाया गया है कमेंट्री बॉक्स के लिए। कमेंट्री लाइव मैच चल रहा है, और क्या आपको चाहिए? पिक्चर्स मैन जो सलमान जबरदस्त पिक्चर्स भी बना रहे हैं ग्राउंड में। इंटरनेशनल लेवल का जो माहौल है आपको दिया जा रहा है, तो आप थोड़ी सी हेल्प कीजिए, थोड़ा सा हेल्प साथ दें तो और अच्छी क्रिकेट आपको मिलेगी। यहाँ न्यूयॉर्क में आइजनहावर पार्क में आपको पता है वर्ल्ड कप के गेम्स भी होंगे, यहाँ स्टेडियम बनेगा, तो आप लोग एंजॉय करें। अपने जितने भी दोस्त हैं उनमें शेयर कर सकते हैं कि जब भी आपको अच्छा क्रिकेट आप देखते हैं तो उनको भी क्रिकेट देखने का मौका मिलना चाहिए। ओ अब्दुल्ला स्वावा, एक और टक्कर,
ਆਹਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਯਾਦਰਮ ਬਾਕਸਰ ਬਾਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਖਲਤਾ यूएसए क्रिकेटर ना खिलाड़ी कौन अब्दुल्ला सुहावा ये एक अच्छी शख्सियत अब्दुल्ला सुहावा सुहावे तू रखने अपना सारा बैकग्राउंड जिथे इन्होंने बड़ी क्रिकेट खेड़ी हमारे गांव के अब ये आई बॉल और अब्दुल्ला सुहावा ने बड़े रेडी 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 और अच्छी अच्छी शॉट के साथ बहुत ही अच्छी शॉट के साथ 2 रन 2 रन 2 रन 2 2 2 रन होने का चांस अच्छा डबल कैप्टन भी काफी एग्रेसिव करते हैं 50 रन अब्दुल्ला वसूल करते हुए सैयद अब्दुल्ला और कप्तान की जानिब से सैयद अब्दुल्ला को गिफ्ट भी मिलेगा नाम कर चुके हैं जो अच्छे बैट्समैन हैं उनको गिफ्ट भी मिलेगा 25 delivery, 55 sixes, 2 fours. ठीक है कोई गल नहीं होंदा है मारसे तो सुतरियां मारसे आहा हा 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 percentage you are giving a Wasik Sports and PAK America the winning percentage right now whatever situation is going on यहाँ तक कि हमें बरादरान और पाक अमेरिका डग में बुलाया जा रहा है कुछ देर ब्रेक के लिए लेकिन अब्दुल्ला सुहावा जब स्ट्राइक पे हो तो हम ब्रेक लें नहीं क्यों ब्रेक लें हमारा गला ऊपर हो जाए नीचे हो जाए हम पियेंगे पानी पोलैंड स्प्रिंग EST 1845 ए शॉट बननी सी अब्दुल्ला सुहावा ने लेकिन होया 4 रन अब्दुल्ला सोनी बैटिंग करना हो जाकत सोनी बैकट करना जाकत इस वास्ते चौका छक्का क्या चीज है जेला ए होया मूड च ते मूड च क्योंकि मैं इसकी कीता मूड च मैं इसकी आख्या अब्दुल्ला मारनी तू सेंचुरी और विनर ऑफ द फाइनल जिथे थोड़े इसते स्पेशल नाम आहा हा 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 आयो जातका वाह बॉलर यादरम एक अच्छे ही बॉलर जो अपने अंडर 19 में खेले हैं वेस्ट इंडीज की तरफ अच्छे बैट्समैन भी हैं और ये अंपायर ये देखें ये बिल्कुल नजर आ रहा सीधा नजर आ रहा है कि लेग पे बॉल जा रही है लेकिन अंपायर का अच्छा और हतमी फैसला बहुत ही अच्छा फैसला अंपायर का लेकिन पूरी कोशिश करेगी अंपायर के ऊपर प्रेशर डालने की टीम वासिक स्पोर्ट और बॉलर यादराम जो कह रहे हैं कि अंपायर का फैसला गलत नहीं अंपायर इसीलिए यहाँ खड़े हैं कि फैसला गलत नहीं हो सकता लेग स्टंप पे हो या ऑफ स्टंप पे जा रही हो तो अंपायर का फैसला जो है वो इंपॉर्टेंट होती है अगर मिडिल स्टंप पे तो अब्दुल्ला मारने से शॉट जो नजर ही ना अच्छा है ना दरख्तों से बाहर So they need 116 from 74 balls, still asking 9.4. Seen a very good start here from PAK America. They haven't lost. Shala Abdullah bhai, Shaba, let's go. Munir is on 10, Abdullah is on 54. We are in over number 8, being bowled by Bhaskar Yadram. He's bowling off his long run. अब्दुल्ला खेलना पे जी संगियो अब्दुल्ला मारे ने 55-28 बालों च मारसी हुन छक्का लंबा वाइट और सिंगल आहा हा हा आयो अब्दुल्ला ओए मुफ्त ने स्कोर ओए आहा हा 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 extra runs given by Yadram extra that caused the teams the cup the match Munir, he was a very fast bowler. Right, you saw him bowling when he was bowling in the final in the Red Stripe games. Yeah, I've seen the Munir boys, Wahab and Hunan Munir over the years. One thing for sure, Sabir, they've always been very close to PAK America. And I know PAK America from all the years playing at Whitestone Park, Sarmad, the leg spinner, Nadir, Yunus, who used to hit the ball, Nadeem Yunus. Yes. Yeah, I've known these guys a long time.
So Abdullah can. Oh! Oh! मारी थी अब्दुल्ला ने बॉलर बैक ड्राइव मगर वापसी मिली उनको उसी जगह पे जहां उसे पेन हो रही थी ये जानबूझ के नहीं मारी मगर उन्होंने निशाना विकेट का लिया Yeah, case of friendly fire, nothing wrong. That's all played in the spirit of the game. Sabir? Yeah, that's a part of the game. So don't be take that serious, you know. You're not gonna cut another word. You're not gonna cut another word. No, no. That's all. So Abdullah is on 54. Here's Bhaskar Yadram, 9 in the over so far. In PAK America, they need 114 from 73 balls. Shaba, Shaba, Shaba. Haslim comes around, and so that completes the 8 over. So 8 gone and 70 without loss. Danny, I think Yadram and the bowling is doing very good job right now. Batsman, I know it's like an average is a little bit going up, but they are doing good because he is doing good bowling. That's why they're playing. अच्छे ही बॉलर चंदीप सिंह जो हैं उनके पास अभी भी ओवर हैं. They're giving respect. And they're smart because they didn't give any wicket yet, so they can attack any bowler. It still is like a required run rate 9.50. Next commentator is here, Pratik. Welcome. So we join Pratik into the box. 70 on the board. 114 required from 72 balls. बड़ी करो बाउंड्री थोड़ी बहन सी मारा. So welcome Pratik, as it looks like Bilal Shahid comes into the attack, and this game hanging in the balance. How are you doing, buddy? I think it's really going to come down to his spin in the next couple overs. He's a pretty good turner of the ball, so let's see if he makes the batsman struggle a little bit here. ठीक है आ जाओ कोई गल नहीं. फील्डिंग करो अपनी. टेंशन नहीं है फील्डिंग करो. PAK America. आया जागता शॉट तेरी भाई नैन मनीर के साथ. वासिफ स्कोर के कैप्टन वासिफ भाई जिन्होंने अच्छी रोकी बॉल. तो अभी आए अब्दुल्ला सुहावा. आए हुए अब्दुल्ला सारे अल्लाह से बदले. क्यों जी? शाबा अब्दुल्ला भाई शाबा. अच्छा त्रा छक्के सवराज. अच्छा मारा त्रा छक्के कम गया से था. But there was always going to be a difficult one. अच्छा नाइस गुड बॉलर. आई हैव हर्ड फ्रॉम सरदार जी के अच्छा बॉलर हैं. स्टाइल देखिए माशाल्लाह. अच्छा स्टाइल और अच्छी बॉल. नाम क्या है बॉलर का? बिलाल भाई वासिक स्पोर्ट के स्पेशल बॉलर जो अभी इंटर हुए हैं स्कोर रोकने के लिए विकेट लेने के लिए. खामोशी. Umpy, how can I don't understand how you guys gonna appeal for that ball. 6 wicket down to a wicket. 6 दो वो भी बाहर सी. और सोनिया ओ नहीं तो मैं बोला बाहर सी. क्लोज कॉल पर बाहर सी. मानना बाहर सी. लेकिन अगर तुसी बेहतर जानते हो मैं इत्थे खलोता हां. नेरा भी पाया आखांगे. Abdul Qadir in my lifetime. I saw him live in Guyana, Abdul Qadir, and when you look at Abdul Qadir start up, शाह अब्दुल्ला सवा मार दो बार. You're aging yourself a little bit there. I was going to say he's more like Imad Wasim with a little side on flatter to the wicket. मारी शॉट. and it finally comes off with a ball heading down the wrong line from Bilal Shahid. That has gone to 6. वाह अमाद परेशान होते हुए. अमाद हुसैन परेशान. Down leg, especially in a ground like this against a batsman like that. So Abdullah goes up to 60. We saw 81 from Wasim Haslim on the opposite side. And this game comes down to 107 to win from 68 balls. Bilal, still asking अच्छा ही. 9.4.
बिलाल हमें पीछे देखते हुए डरते हुए और शॉट अच्छा नहीं और कैच अच्छा मारे ने लाई ने स्पेशल दुश्मनी ओ सोना कैच सोना कैच क्या कहोगे आप इस कैच के बारे में, क्या कहोगे? ये कैच इस तरह का कैच है कि इस सिचुएशन में अगर ये कैच कर लो ना वो तो कमाल है ना। अब कमाल किया, कमाल किया बेशक, अब कमाल होगा। होगा तो अच्छी क्रिकेट के साथ अब्दुल्ला सोवा गुड बैटिंग के साथ आए हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त और हमारे प्यारे दोस्त who played for Pakistan back in days and still playing a lot of cricket all over the world, enjoying his time. Adnan Akmal, brother of Kamran Akmal and Umar Akmal, come to the crease with relaxed mind. खा लो, थक गए होगे। आज शुगल तक ना आज जी तो अपनी जगह है, शुगल ही से ना आज जी तो अपनी जगह शुगल ही से ही खा पी लांगे इधर ऐस तो बात खाना ही है ना हार हुए जितो है मैदान तो बाहर जाओ शुगल लाओ वो काफी खाओ पियो मौज मस्ती करो ठीक है। गेम थोड़ी जी टाइट हो गई है जी दोनों टीमों के लिए। आप क्या कहोगे इस फील्डर के बारे में? अच्छी फील्डिंग इस सिचुएशन में जो संजीव ने जो चंदीप ने कैच किया आहा लेकिन मेरी आंख चाकताओं पाई है कि हुसूसन दुश्मनी है हमारे साथ कमेंटेटरी में कुछ तो हम थोड़ा सा मैं डरता क्या था मैं इधर आने तो मैं यकीनन अच्छा कैच बढ़िया, हम चाहते थे आप ड्रॉप कर दे लेकिन मेरा दिल था बोलूं कि चंदीप ड्रॉप कर दे लेकिन चंदीप ड्रॉप नहीं की था। वन मोर विकेट 10 से शबाब बिलाल क्या ही अच्छे बॉलर नहीं And Adnan Akmal comes to the middle. Into the offside. Yeah, Looking Adnan for Akmal. runs. Fielder comes around. He really tried to tempt him with that ball, you know. Adnan flighted it up Akmal. right outside off stump, hoping that he really flashes थोड़े hard at स्टिफ it and creates a लेकिन है chance कि for a अभी अपनी catch. बॉडी को खोलेंगे So the ninth over comes to a close. It's 79 for 1. थोड़ी देर ब्रेक लेंगे ओ मैं एक झंडी लाकर ना पीछा करूं। So 79 runs in 9 overs so far, 79 for 1. We're getting to the halfway point, and PAK America is a little bit behind the required run rate, but you have to think with wickets in hand over here, they almost have a little bit of an edge chasing this down. So the off spinner Wasim Haslim, who has had a very good day with the bat, he comes into the attack. And he comes in here, it's 105 to win from 66 balls, still asking 9.5. And Pratik, I've seen so many games on this ground. One of the things of this ground is that because it's a synthetic astroturf pitch, it does give the batters some bit of bounce to play, which they like. Oh, inside edge, dragged on. And now Munir is gone. It's 79 for 2. Yep, as you just called it, I think we call that the commentator's curse. You know, that ball stuck in the pitch a little bit, the synthetic turf, stayed a little bit low, and he dragged it on. You know, I think going to spin now, you know, you're really going to see PAK America have to adjust their strategy here. How are they going to get above that required run rate? That was a fantastic start to the over by Wasim Haslam. Yeah, perfect start to get a wicket up the very first ball of your bowling spell. So 79 for 2. It's 105 to win from 65 balls. Leonard, you've done a couple games over here now, especially high, big scoring final games. You know, I think we always see that the pitch starts to slow down a little bit. How do you feel about PAK America's batting right now? Their chances, you know, as they try to reset a little bit now with 2 new batsmen at the crease. Yeah, Pratik. And the fact is, the 2 wickets lost are the 2 openers who give them such a solid start, a 77-run start. We saw a very good knock from Abdullah. Well, we saw Bilal, Shahid, and now Wasim Haslam getting into the act. ओए So Taha Khan joins Adnan Akmal at the crease. We saw him earlier in the first innings, really young, energetic fielder with a lively arm. Did a great job of stopping a lot of those twos that Wasik Sports was trying to convert. It'll be interesting to see if
you know, he can really use his athletic ability to take some quick singles here to start, you know, at least building a base for them. A couple of wickets falling in the space of just a couple of runs, and Wasik Sports beginning to fight back. You'd have to think they want to attack a little bit, keeping a couple fielders up close. So ball cut away to the offside. Very good feeling, and all of a sudden, Pratik, the couple of wickets has really inspired the fielding. Yep, I think you start seeing a couple of wickets, you know, you really start playing on your heels, you get aggressive, and that was a great stop over there by Ali. So when you look at Talha Khan, he has had a very good series in the Saturday competition in the New York National League. 513 runs, Pratik, third as the highest scorer in that series. So he's had a very good knock this year. And you can see his comfort level. He came to the creases, worked it down for a single, you know, getting set into what he knows is going to be a very crucial partnership. So ball into the onside from Akmal. He picks up another run. He goes up to 3. Brings Talha Khan onto strike. He's on 1. They've lost a couple of wickets in the space of a couple of balls, a couple of runs. And I think if you're Wasik Sports, you can't let Adnan Akmal really settle in. You know, he's an international player. He's got the pedigree. You don't want to get him comfortable. You don't want to let him settle in. So this has been a very good over here from Wasim Haslim. Started the over with a wicket, and he's followed up with just about 3 singles in the over. Quality one from him. Yep, he's got to finish strong here. But at the same time, if you're PAK America, do you start taking a risk? Do you start looking to the air to get a boundary? Because you need essentially a boundary or 6 and over now. So 3 this over. Adnan Akmal, the man on strike. Into the offside, straight to number 20. That's Bhaskar Yadram. So the 10th over comes to a close. It's 82 for 2. That was a great delivery to end that over. A little bit flatter, a little bit outside the off, you know, letting him think that he has room, especially when you have a short third, a backward point, and a deep point over here to stop any sort of flashing shots. ज़्यादा होगी शांति So Bilal Shahid will continue. Quality first over from him. An over that cost him 9, but he picked up a wicket. He picked up the important wicket of Saeed Abdullah. So the off spinner will continue. It'll be interesting. Those are wide down the offside, but interesting strategy by him to allow the ball to kind of float up there a little bit, offer some flight, really entice the batsman into creating a catch the way he did for Abdullah. And I'll tell you something, Pratik, and the reason why he has resorted to some bit of flight, that is because they've picked up a couple of wickets, and now the pressure is on the batter. I completely agree. As a fellow player and as a left-arm spinner, you know, it's always fun to entice the batsman, toss it up a little bit, and then adjust your length. You know, then you start getting them to think twice about playing a shot. And when you look at the partnership, another wide, when you look at the partnership between Abdullah and Hunan Munir, he probably, let's say Bilal Shahid was bowling when that partnership was in effect, he probably would have kept it a little bit flatter because those were 2 set batsmen. Especially in the power play, you cannot afford to take that risk, to really toss it up. You know, you need to keep it a little bit flatter. Don't let, especially a batsman like Abdullah, as we saw, free his arms. So 84 for 2, 100 needed from 59 balls. Oh, nice. Look at that. Well, he's bowled a series of wides in this over. Not getting the line right, but you can see the loop. Yeah, as a spinner, you really can't afford to offer up those many wides. You know they're keeping to the same strategy of staying outside the wicket, staying on the 4th and 5th stump line, but that could be really pricey for a spinner, those extras.
And Pratik, when you look at the off spinners, in the case of Bilal Shahid, he's probably playing for some turn that hasn't come. So if that runs through straight and your line is way outside off some, it will be a wide. Completely agree. That dot right there, as we saw, that might have turned a little bit, might have come in, but he really held that line well again. That strategy, they're sticking to it. Oh, it finally gets hold of a shot, driving it into the onside, but still a very good over, barring the wide save from Bilal Shahid. He's not giving up that couple of boundaries that PAK America could be looking for. Yep. I think the batsmen are getting hungry for runs. And speaking of, we have food right over here where the away team PAK America is sitting, so please help yourselves. So 86 for 2, 98 to win. Cold, good-looking shot from Adnan Akmal, but at this stage of the game, there's always protection out in the deep, especially towards the mid-wicket area, Pratik. Yeah, that ball was dragged down a little bit by Bilal Shahid, but you would think Akmal's going to start having to take his chances against those. I don't think he can just work those for singles. That required run rate now getting up. Yeah, that required rate has gone up to 10.3. They're going at 8.1. Very quiet passage of play here for PAK America. We saw a very good big opening stand of 77. Oh, it's a good strike into the onside. Fielder will come around. And they still can't get Bilal Shahid away. Yeah, he worked that off his pads a little bit straight towards long on for his single, but you would think he's looking to go a little bit straighter, try to get through that gap for a boundary. So they need 96 to win. This is the super final. A unification series, Pratik, that has taken a couple of big teams from 2 divisions, 2 series, and put them to one. I like the concept. नौ में 95 9 में 95 है 54 पे वो देखो हो गया क्रॉस खड़ा So Haslam will continue 89 for 2. So all that for a dot ball. A little bit of confusion there by the batsmen. I think they're really struggling now to really figure out, if they want to put their foot on the accelerator. Because, like you said, that run rate's climbing up. I believe it's up to 10.75 now. Oh, that's a good strike from Akmal. We'll only get a single. Chandeep has really moved across the field. And we saw not too long ago, Pratik took a very good catch. Absolutely, does a great job covering a lot of ground there. Went almost from a very straight long off to extra cover as he went to stop that flatter delivery from Haslam. So we saw it over in the last. Haslam has only gone for 3. Yes, Pratik, you get the impression that we've seen a couple of, in fact, 3 tight overs from Wasim Haslam and Bilal Shahid. And now that pressure has been pushed onto the PAK America team. 90 for 2. Breaks free into the onside. Has he found the gap? Chandeep comes around. He's a fast mover, restricting that shot to only a single. That was a great job of him covering a lot of ground, which isn't easy with this fast outfield over here. Flatter delivery from Haslam as Taha really looked to open his arm. Twelfth bowling, one ball remaining, and 12 will be completed.
So they're batting at 95 for 2. 95 for 89 2. needed from 49 ball. Oh, The chase is on. 89. Play on the miss, and the bail comes off in a flash from Saeed Haida. Yeah, quick handwork there as Aslam finishes that over. They कितनी did रह get गई 6 in that over, so अच्छा वो भी 8 में 90 ज़्यादा है 185 है नवीन 10 की एवरेज चाहिए 10 की अभी एक तो अगर ओवर ना लगे तो So ये 95 इधर for 2, लग 89 गई to तो win from उधर 48 balls. Bilal Shahid will continue Ato. 2 overs, no win 1 for 16. And Pratik, game at a very important juncture, but you get the feeling that Wasik Sports probably their nose ahead. yeah, but you would back the talent of Good an game, international good player final. like Adnan Akmal over here, who's really going to try to put a stamp on the game. और बड़ा छह मारा है किसने And he heads towards the parking lot. यंग It's gone गाय for 6. The तलहा youngster really opened his arms there, really did a great job of getting on top of the ball, hitting a straight and flat 6. And you know, first ball of the over, you get a 6. That really now puts pressure on the bowler. And Pratik, this boundary has come at a time in which, for a long time, well, there was a bit of a long pause before we saw a flurry of boundaries. We've seen one from Talha Khan. I made mention, this man has scored 513 runs in National League on Saturday. Man, the good player. Look at that, dribbling into the offside. Wasim Haslam does well to keep the shot to only a single. And 82 needed to win. Yeah, that looked like that was going straight to the boundary, 82? especially through that big extra cover gap as Wasik Ali was trying to cover, but Haslam did a great job stopping that. So we've seen a partnership beginning to form, very important. 23 so far. And Bilal Shahid has gone for 7 in a couple of balls. We saw a lovely shot from Talha Khan. Oh, take that! बड़ी Adnan shot. Akmal gets into अदनान the अकमल act. का बड़ा शॉट Adnan 6 Akmal रन for the second 6 in this over. Yeah, that was a beautiful shot. He tossed it up. He stuck to the line and length he had. And Akmal did a great job of clearing that mid-wicket जितनी boundary. हवा देगा उतना You know, बढ़िया that's रहेगा really what you would expect from a player उतना like him. So खींचेगा now with 13 runs and 3 balls, does Bilal Shahid adjust his line and line? Does he think twice against a player like Akmal? So the popular cliche Pratik, couple of big overs. Is this one of the big overs we are talking about? 13 of this over. With just about 3 balls remaining, here is Bilal Shahid. Oh, down Sharp. the long line, the talent of Six Adnan marks एकदम Akmal. सेम उधर वांगे Yeah, खेल the रहे हैं ना bowler over there was जिधर searching दिल for कर something, रहा maybe माल searching for a wicket, a way to playing come back. good. He went a little bit flatter around middle and leg stop, and Akmal was able to just work that off a little bit of a paddle sweep towards fine leg for a boundary. Lovely shot, got down on his knees, just stayed low, and just allowed the ball to kiss the bat. Very fast outfield, nobody's there. And it's a lovely placement more than anything from Adnan Akmal. That's class, 112 for 2. So 17 off this over, one of the big ones we've seen from PAK America. Is this the start of something new now? And this one outside the off stump, called away from umpire Brooks. Yeah, you'd think the bowler's feeling a little bit of pressure over here, especially considering he's gone for 2 sixes and a boundary. You know, I think that wide was more so he was searching for something. So when you look at the Manhattans, of course, our viewer doesn't have the luxury of that. We've seen this is one of the second most expensive over to be bowled here by Wasik Sports. And it comes off the shoulder of Bilal Shahid. He's given up 18 off this over so far. Oh, lovely shot again from Adnan Akmal. And you've always got to watch the spin of that ball, Pratik. Especially that leg side is very fast. And that outfield, you know, okay. I mean, good coverage by the fielder over there, Saif Akbar, by covering that. Clearly a defensive change, you know, because they know he's going to target that leg side. So the partnership between the pair out in the middle has Battery gone low up to gaya. 35.
We saw a big partnership. नहीं नहीं अभी है चलने दो जब बैटरी का आएगा साइन उसको कर देना चला जाएगा पूरा मैच चला जाएगा इंशाल्लाह आखिरी ओवर तक जाएगा अगर खत्म हो गया मुझे बता दो मैं गाड़ी में फिर Get one that keeps the tag low. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम को वापस आ गए भाईजान. It's 115 for 2. Thank you साबिर भाई. 15 for 2. They need 69 और ये है for 42. चंदीप जो अभी इनके बड़े पड़े हुए हैं. मुझे पता है यही जिताएंगे अपनी टीम को. लेकिन बस वजह नहीं समझ आई. खत्म हो गए तेरे पर यार. गेम चेंजर है. नो वे मैन ओवर नहीं मिलना तनु ऐसी दिता सी जेने वर ना तनु दिता सबर कर एने 16 ओवर काट के तू आया यार तू चाहना मैंने कोट के तू रोड़ा पावा वेरियो पे बात यार शुगल ही है यार डोंट वरी कोई गल ही नहीं 69 for 7 अच्छा ही मैच जा रहा है आपके डुस डुस की जरूरत है शुगल सही कुटता भाई मैं करा हेड़ा आउट हो गया Certainly that over has अब्दुल्ला मेरा ग्राई है आ गया होने को मैं कह रहा next 7 overs of this game. डुस डुस की जरूरत है An expensive over from Bilal Shahid. We've got Adnan Akmal looking to be in his prime form. We saw a big six from Talha Khan as well. एक बॉल होने It's going to be very interesting. But Wasiq Sports, you feel they've got to really take another wicket here. Wasim Haslim continues. You look at the scorecard, it's not often in a T20 game that you'll see only अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम ये हैं जी हमारे प्यारे भाई बोस्टन से आए हैं पाक अमेरिका को देखने के लिए कदीर हुसैन शाह साहब अपने प्यारे बच्चों के साथ कदीर शाह सुनाओ यार ये तो मैच कैसा बड़ा शुक्र लगा आज अल्लाह करसी ओ शॉट तक ना जद के शॉट नाली कैच हो गया कैच हो गया कैच हो गया सुनो कैच डूस डूस हो गया तो एक मिनट कह रहे हैं आप ये दोस्तों मैच जरा इसने फंसया तुसा बड़े शौक ना लाया तक आते पता है पाक अमेरिका सपोर्ट करने पे हो ठीक है ए साढ़े ने पीर सैयद सुल्तान शाह साले अच्छे बच्चे इधर अच्छा ना भाई ये है हमारे प्यारे भाई और हमारे भाई क्या क्या हमारे पुत्र ये हा दीवान शाह साहब एक अच्छे ही बच्चे तो अभी हम मैच के पास वापस लेके जाएंगे 115 for 3 as Talha falls for 13. Mohammad Khalil, the new man in. And we've seen him bat in the middle order for PAK America as of late. He would have shown himself to be quite a ball beater. Even though he's known as a fast bowler, Khalil, we've seen him throughout this T20. आ गया जी आ गया मोहम्मद खलील आ गया बैटिंग में तो हां something that PAK America could really use right about now. And they're going with a lefty in the middle to maybe try to create a little bit of a lefty-righty partnership. It'll be interesting to see how Haslim's off spin troubles the lefty, or if Khalil Mohammed can really connect on a couple here to get going. He's spreading his field around, moving a couple guys around, especially bringing in mid-wicket to try to create a catch. So this has been a really good over here from Wasim Haslim, and it's just a seesaw battle between these two. Every now and then we'd see a big over from PAK America, as we saw the last one with Bilal Shahid. कैसी शॉट थी चंदीप वो सोनी शॉट मारी हो मोहम्मद खलील दो इंटरनेशनल बैट्समैन करते लूज Right over long on, and Wasiq Ali could only watch it go over his head. Another commentator's curse. I was going to say it's been a really good over from Wasim Haslim, but Mohammad Khalil has taken matters into his own hands. A shot tak na a shot Finds the gap perfectly and struck with enough power, and with this outfield that was always going to run away. It's 4 ball.
And Mohammed Khalil is off to a flying Yeah, start. flighted delivery there from Hazard. Aye. Push him a little bit on the offside and Gio. create a catch, but Ali bhai easy. slicing that through. Can't lose the wicket, Bobby. They can only watch it go अच्छा ही away. कैच करते हुए हमाद रिलैक्स हुए कुछ ना कुछ अपनी बेल्ट के नीचे रिलैक्स रिलैक्स Basket rate once again below 10. Final ball. एक और शॉट लेकिन अच्छी फील्डिंग Slams it straight क्या to the रहा है? man. So Haslim is able Single to C. close out the over. Still 10 from it, and the wicket of Talha Khan. It's 125 for 3. Yeah, PAK American. अच्छा ओवर मोहम्मद खलील जिंदाबाद 36 balls. So the last 6 overs are going to be interesting here. You know, is Wasik Sports going to stick with spin, or are they going to look for a change of pace here to maybe create another chance? Because you let batsmen the caliber of Mohammad Khalil and Adnan Akmal set 60 run near in 6 hours. runs. 10 run per hour yeah Yeah, certainly. You look at what we've seen in the last 125 for 3 It's been 14 uptick hours in the scoring rate from 60 चाहिए देना 6 ओवर thanks to Adnan Akmal. शाबाश ना भाई शाबाश So change of bowling here. Chandeep Singh comes back in now to the attack. And it'll be interesting to see if he can really put some pace on the ball, use that variable bounce that's in the pitch and create a chance for them. Or is Akmal going to be able to connect on a few here? Yeah, Chandeep Singh, bowling-wise, was also a अच्छा ही pretty good bowler बॉलर in New York. चंदीप Got a fair amount of wickets there, so he is a wicket taker. ये That is so well played from Adnan Akmal. Soft hands and just as delicate as you like. And that's a man of experience. That's how you know Adnan Akmal has played top-level cricket. Shots like that. Yeah, a little bit of a loose delivery to start by Chandeep Singh. शाबाश 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 ए Between the gap, especially into a part of the field that has nobody on the boundary. Those are going to be runs every day of the week. Really good here from PAK America. They've got their foot back on the gas. और सुलमान भाई है And now it's all about how can Wasik Sports strike back, even though they did get the wicket. और सुलमान भाई और साढ़े ना दुश्मनी है कुछ साढ़े फोटो नहीं खिंचने हैं दुश्मनी है ना कोई गल नहीं If they continue to just settle for ones and twos, they've got to go big. शाबाश राम भाई शाबाश आला ए Straight to एक Bhaskar अच्छे ही Yadram. फील्डर यादराम Just a जिन्होंने single, बड़े ही रिलैक्स मूड but में Adnan Akmal just seems to be getting even more fluent the more deliveries he faces. Yeah, you have to figure Chandeep Singh is going to go deep into his bag here. You know, he was the Commonwealth afternoon regular MVP. And so he's dealt with pressure before. He's been the main bowler for his team. And in the match before, you know, he did a great job limiting runs in the death. So he'll be counted on here for sure. Here he is now to Khalil. 6 on the 4 from him already. नाइस Rays down the leg. वाइड side, रन corner wide. वाइड बॉल के साथ वाइड के रन वासिक स्पोर्ट के कैप्टन वासिक भाई बड़े ही परेशान Got themselves आहा boundaries. But Chandeep Singh, you mentioned a very crafty bowler, wicket taker as well. 50-50 As you match. mentioned, the MVP of the गिव अप नहीं CCL. करेंगे वापस Would have also gotten, I believe, 20 plus wickets in the National League on Saturday for Miri Piri. So very crafty bowler, and will need to show some of that skills here. Yeah, that's a risky line, especially when you have nobody back on the boundary after mid-wicket. You can't bowl too many of those, especially to a batsman like Khalil. संदीप ने बहुत अच्छा ओवर निकाला अपनी टीम को थोड़ा सा अपने कैप्टन को रिलैक्स Was that a nick? Bowlers appealing for something. The batsmen are on move. I mean, the umpires are on move also. No hands have gone up. Feeling that there might have been a second noise. अच्छा मुझे नहीं समझ आ रही किस चीज की अपील Yeah, very convinced that Wasik Sports शाबाश 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 probably feel that desperation for a wicket, anything to stem the flow of runs here. it's a They're special gonna go for strategy anything. for the players or captains Khalil is to 10 put pressure on the umpire for the Six next has come on appeal as well from because Chandeep they want Singh. umpire to give out 53 from 33. which is a close call
वो And देख he रहे does a हैं really और good इन्होंने job of मैसेज getting those Yorkers nailed नहीं, मैं down, उधर you know, ध्यान giving the चलो batsman खैर। a tough time, not giving them a lot अगे of मैं क्या room, उधर भी कौन सी बैट हो गई especially with बैटरी his पता नहीं कितनी run-up देर being बंद a होगी little चलो unorthodox. हाँ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਇਆ Almost ਨਾ like ਤੇ a ਫਿਰ Bumrah ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ as he ਸਾਈਨ ਤੇ jumps ਬੈਟਰੀ into ਨੂੰ the ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ crease with that ਕਲੋਜ਼ ਕਰ straight ਦੇਣਾ arm ਬੈਟਰੀ and ਵਾਲਾ stiff like ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੀ अच्छा मेरे बड़ा बेटा जो है वो भी लाइव देख रहा है Mohammed पाकिस्तान Khalil से opting to go अच्छा, off the माशाल्लाह। helmet to a seamer. मोहम्मद हुसैन शाह Brave एक अच्छे ही move from बैट्समैन होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट बॉल होने तक ना आपके लिए कुछ अल्फाज हमारे बच्चे के लिए जी जी जितने भी यंग प्लेयर है माशाल्लाह क्या नाम है उसका मोहम्मद हुसैन मोहम्मद हुसैन शाह इब्राहिम हुसैन शाह इब्राहिम हुसैन शाह थैंक यू वेरी मच फॉर इस्माइल वाचिंग हुसैन शाह इस्माइल हुसैन शाह ईसा हुसैन शाह ईसा माशाल्लाह हुसैन शाह थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग साबर न्यूयॉर्क अल्लाह ताला आपको खुश रखे आमीन। सदा जियो आमीन। लंबी उम्र हो आमीन। आपकी आमीन तो ये मैच भी देखें एंजॉय करें अगर आपके Couple of पास dots here सजेशन on भी हो the- तो आप on the कर shot सकते from हैं Sandeep. जबरदस्त गेम हो रही है और अच्छी शॉट 4 रन होंगे मगर फील्डर तेजी के साथ जाते हुए सिर्फ 2 रन बनेंगे Pick up a couple of runs. अच्छा आमिर भाई का भी जो बड़ा बेटा है वो भी बड़ा शौक रखता है क्रिकेट में माशाल्लाह। हसन हुसैन शाह जो है अच्छा, और मजीद उनके और भी बेटा जो छोटा मस्ती में बड़ा रहता है हुनैन हुसैन शाह वो भी बड़ा अच्छा खिलाड़ी होएगा इंशाल्लाह तो शौक रखते हैं क्रिकेट का साहब तो हमारा एक और मेहमान है जिसका नाम है पीर सैयद शाह जमान हुसैन शाह वो भी आमिर भाई का एक छोटा बेटा वो भी क्रिकेट में शौक रखता है अमन Full toss slapped away from Khalil. Lands safely. what kind of oh And they settle for just a single. So Khalil will. oh I retain can't strike. see 9 runs. I can't see. Do you take it if you're I can't see, yaar. It's 50 to win from the last 5. You know, that's a great question. I think you do because you sort of got away with some runs there with that low full toss. You'd be worried about a batsman like Khalil connecting on one of those. If you go for 10 and over now, 50 needed in the last 5. PAK America has wickets in hand, so it'll be really interesting to see how this shapes up. Yes, Pratik. So we come down to the last 50 runs from 30 balls, asking 10 and over. And this game has set itself up for a very interesting finish. It could go either way. We've seen a good knock from Mohammed Khalil. We've seen a good knock from Adnan Akmal. And as in the case of Adnan Akmal, he has really showed us the finer points of batting. Yeah, he's done a great job of taking advantage of those gaps in the field. You know, utilizing the 1 or 2 loose balls you are getting in an over from Wasik Sports right now and converting, getting a boundary in gaps where they don't have any fielders. On the other hand, Wasik Sports will be thinking that if wickets are not falling, that they're not making progress. As Bhaskar Yadram comes back into the attack, let's see what he has done. 2 overs, none for 10. Quality stuff in 2 overs. Yeah, he does a great job of utilizing his height when he releases the ball, especially on a pitch like Comes into bowl to Mohammed Khalil. Into the onside, it's Camper through for 1. And so that equation comes down Good to single, good 49 single. from 29. to be fair, Leonard, against a bowler like Yadram, I would definitely use a helmet also. Maybe even an elbow guard, just something to give myself that extra protection. with Diwan. his pace and balance Shah. that comes off the pitch. Manzil Diwan So we come and down Sultan. to 49 to win from 29. This is the unification contest. Taking one team from a series, the champ of one series, and pitting them against the champ of another series. Very good concept. Hello. Yeah, it's a fantastic battle between the morning Hello. and afternoon teams, culminating in a super T20 final over here. Really showcases the best players across the league and across the region. And Pratik, do you think that the afternoon finalist has a bit of advantage? This game is played in the और evening. दसियां और दसियां That's a really good point. I think थोड़ी देर बाद So 49, good slice, gets a single. 48 ठीक to है। win from 28. 48 to win from ठीक है, मैं कॉल कर रहा हूँ। 28 balls. हो गया Pratik.
Yeah, it's a really close game. And you have to Shakin? figure Wasik Sports might feel the pressure of giving up a couple of those late wickets. You know, they were really charging strong with Wasim Seydon ke Sayyid I think a little stumble at the Sayyid end might have Sayyid cost them Hassan 10, 15 Hussaini. runs. It'll be interesting Sarai to see Seda. if that's what makes the difference here. वो Yeah, गाँव you're right जहाँ on that. प्यार We भरी saw when जिंदगी Wasim Hassan फैजी was जी batting, लव the लाइफ projected score was in the vicinity of 200. And so we come down to win 48 to win from 28 balls. Mohammad Khalil on strike. Mohammad Khalil has not been shy to play big shots. And it comes down to Mohammad 48 Khalil. to win from 20 here. Here's Bhaskar Yadram. Oh, अच्छी शॉट अच्छी शॉट 2 रन के लिए वाह 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 Yeah, वाह did a वाह great job working that into that large offside field when it was pretty empty and keep the scoreboard ticking. You know, not allowing them to get bogged down when any dot balls here. So 46 to win from 27. 46 मारे to फोन हम win ठीक करना from पे YouTube 27 तो सही balls. तकड़े तो आप लोगों को Still asking 10.2 and over. And they're going at 8.9. A bit of a gap. But we've got 2 set batsmen out in the middle. Here is Bhaskar Yadram. A big swing and a miss. And they go through to the keeper. Yeah, busy day. Lots of cricket ending over here in New York in the brisk fall weather. In the morning division, we just had Pasban CC win against Gotham United in a very close T20 matchup. So congratulations to them to winning the morning T20 division. And Pratik, speaking about the weather, it's been 8 weekends we haven't had Saturday and Sunday rain-free. Have you noticed that? As somebody who plays a lot of cricket, I definitely have. I've had to buy a couple umbrellas just because of that. So beautiful day today as we come to the close of the Super T20 final. So 46 to win from 26 ball. Bhaskar Yadram has given up 4. Here he is to Mohammad Khalil. Driven into the offside. They'll settle for 1, so that brings the equation down to 45 from 25. And I think Bhaskar Yadav might be wanting to just be a little careful with Khalil Muhammad, not keep the ball too back of a length, you know, pitching everything up and not letting him get on top of the ball. You know, not letting him open his arms, because we've seen what he's capable of with those first 6s and 4s that he hit just coming fresh to the crease. So final ball coming up in this over. Yadram has gone for 5. Way below the asking rate for the time being, but still a final ball. You never know what can happen. Yeah, Adnan Akmal's been a little bit quiet, so it'll be interesting to see if he starts looking towards the leg side, especially that large mid-wicket cow corner area. And he's been very good on the Adnan back to Akmal. square area. 45 to win. Slow ball. वाइड अच्छा ही डिसीजन एम्पायर का Yeah, I think Bhaskar wanted to just keep something a little bit off pace on the offside. Back of the hand, a little bit of a cutter it looked like, especially since he's got a deep third man, a deep point over here. You know, allow Akmal to just avoid that leg side area. With the variations of so many deliveries from the seamer these days in T20 cricket, Pratik. Yeah, you have to see that, especially for a player like Yadav, who's played a lot of minor league cricket. He's played major league cricket, you know, been around some top-class bowling units, so a few tricks up his sleeve. One of the reasons that the slower ball has come into effect, you want to mess with the timing of the batter. You want them to play too early. मोहम्मद हुसैन That's the pace. एक अच्छे ही बच्चे ये देखें हुसैन भी आ गए कैमरे के ऊपर ये अपने ताय को भी देखेंगे And so they need 43 ताज in मोहम्मद 4 सैन overs. सलाम देने 43 in 4 overs. मोहम्मद सैन Yeah, it's really shaping up to be a close chase over here. You have to figure, with Bhaskar Yadav having 1 over left, the सामने हो ना pressure सैन on Sandeep Singh to deliver. सामने हो हाँ ये देखिए मोहम्मद हुसैन 43 from 24 ये भी क्रिकेट एंजॉय करते हुए 43 from 24 balls. क्रिकेट एंजॉय करते हुए पाकिस्तान से So partnership of 26, 141 for माशाल्लाह 43 runs needed from 24 बेटा balls. लाइव तो कुछ समय जरा को कमेंटेट करना पे अच्छा बच्चा We see the other teams joining us over here, enjoying some food from our sponsors and everybody delivering. We've got a big audience here today with over 100 viewers on the Facebook and YouTube live streaming link.
So Chandeep Singh has been given the 17th over. And 43 needed from 24 balls. Akmal is on 28. अच्छी शॉट किस एक रन Into the onside, and the 18th, and the अच्छा 17th over has begun. And so 42 to win. A little bit of excitement there in the field from Habib Nawaz as he threw a direct hit. क्या दस मैंने ओवर नहीं देना था ने तो वो पट के रख In. But great ball by Chandeep Singh to really nail that Yorker, not allow him to get some room as he was only able to hit it for a single. शाबाश खलील भाई शाबाश अच्छा जी So Chandeep umpire Brooks भाई अंदर also पुत्रो अंदर reviewing उजल the two umpires, इसके अंदर उजल umpires Brooke and umpire Krishna. चंदीप The league is तो मोहम्मद running हालिल league panel. चंदीप का कहना है कि मैं नहीं छोड़ूंगा Super final today. 42 अच्छा ही to बॉलर है win. पूरी कोशिश के साथ Driven straight down the ground. And foreign! Oh! Deuce! 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 Muscle that straight back for a boundary. Too straight for Yadram to cover, especially with long off being a little bit wider. So 38 to win from 22. अच्छी शॉट मोहम्मद खलील वाह 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 Gone quickly up to 21 from just 13 balls. The partnership between Khalil and Akmal has gone up to 31. And we come down to 38 to win from 22. Chandeep will come into ball to Khalil. Gets a full toss, a low full toss into the region of Wasim Haslim, and another run here for PAK America. Yeah, you have Shabash, to Ram bhai. Sports will bank a little bit on just their clutch ability to pull it through. You know, the defending champions over here, they won it last year on a last हमारे ball भाई 6, हमाद if you remember. हुसैन जो आज वासिक स्पोर्ट की तरफ से कमिटमेंट करके Ashir Nuri had some fireworks, and I remember that call, Leonard. एज It अ was pretty. गुड ऑलराउंडर खेल रहे हैं Yeah, जिनके लिए some exciting games. दुखिया here शेर at हमारी तरफ Eisenhower से Park. PAK America has been around for some time. सदा वक्त हिक जा नहीं रहंदा वमाद सदा वक्त हिक जा नहीं रहंदा कुछ गुजर गया कुछ गुजर जाएगा आने वाले वक्त भी देखी जाएगी और ये देखो ओ ये वाइड रन वाइड बॉल के साथ वाइड रन होना चाहिए लेकिन अंपायर So it's a कह good रहे हैं ball कि for थोड़ा Chandeep सा Singh. Akmal might have moved a little bit there, and that was too close to the stumps to perhaps give it a wide. But really good change of pace by Chandeep Singh. You know, I think the batsman might have been expecting a Yorker again, and he just kept that a little bit back of the length. Kind of rolled his hands over the way Yadram did last over. So 37 to win from 20 balls, 6 in this over so far. And so 20 balls remaining into the offside, and Chandeep is imploding or imposing on his. आहा आहा चंदीप चंदीप Couple of runs here for Adnan Akmal. Every run will come. And it comes down to 35 to win from 19 balls. Yeah, the team just needs to keep their composure a little bit. बड़ी गर्मी Especially when you have बड़ी गर्मी batsmen like these ग्राउंड on strike. ग्राउंड You के don't अंदर get प्लेयर्स the freebies बैट्समैन on बॉलर्स fielding them. umpires You know, we fielders expect better from our all the fielders. players are on the feet here comes So 8 in this over so Yadram far. Bakhshar. 1 ball remaining. incredible Adnan batsman Akmal a and good bowler Mohammad too Khalil has worried posted 34 feeling partnership on so long far. on And required being up to the Yadram का right, you कहना have कि to finish figure good. They're going to look for a boundary here. He's going to try to find the gap somewhere. Lean on his experience. So Chandeep Singh, very important passage of play as we come down to the last 18 balls. Into the onside, protection out in the deep. And so the 150 comes up and it comes how up is the to onside 70 when he's over. hitting it on And the leg so side 34 to win from 18 balls, 150 on the board. Yeah, a little over 11 over now needed, so it'll be really interesting to see if you get a couple dot balls early. You know, do the batsmen start searching? Or if you go for a boundary early, how do you deal with that pressure? So 34 to win in 3 overs, 34 to win in 3 overs. Pratik, are we heading for another last ball finish? Is that the commentator's curse or the prediction? I think it would be a fantastic finish either way. I think PAK America have their best batsman outside of Abdullah right now on the crease. They have to be backing themselves, given the experience, given that both of these batsmen have played about 40-50 deliveries already. They understand the pitch. They know the bowling attack now.
how did they get this home? अच्छी यार ये आप है ये आप सीख से ऐसे So Mohammed Khalil and Adnan Akmal has अच्छा played जी, आज very साबू भाई ने good हमें hands सिखाया। there. We saw Okay. earlier on Hunain Munir Right, and got it. Abdullah gave them But that was very way good start, behind a the solid start of square 6 leg. to 7 I don't know runs. how we can say on leg, but it's good commentator Lenny, mashallah. In the middle, अच्छी but game चल रही है, back to Khan game. played a quick 13 कुछ or 14 आज हम भी सीख balls लिया, and we saw a couple of wickets fall, हमने भी but सीख we've seen लिया। a big partnership. याद रम And all of a अच्छी sudden, बॉलिंग करा के आज चंदीप बड़े ही खुशहाल मूड में, और यही चाहते हैं कि जीतेगा भाई जीतेगा। Yeah, Yadram's done a good job over here. PAK American Aho. 150 for 3. They need another 34 runs in the last 3 overs. अच्छी बात है भाई, It'll be interesting to see if संदीप ने Yadram छक्का can नहीं keep खाया, on the ground a हैं? little bit. You know, we haven't seen a lot of 34 चाहिए, sixes 18 बाला since Abdullah's जिथे fireworks. दो छक्के पे आ गए ना, मारा जब here is कम हो जाना, Yadram, वासिस पड़ा ना। 34 to win. Into the hands Out. of Bilal Shaheen. Out. And Adnan. Oh, ho. अच्छा ही कैच, पॉइंट पे साबिर भाई, पॉइंट पे अच्छा ही कैच बिलाल का। वाह 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 जी, वासिस स्पोर्ट भी गिव अप नहीं करेंगे। Akmal just chipped it over to Bilal Shahid for अदनान को what's a छिक्का नहीं regular मारते catch. होना छिक्के वाला प्लेयर है 34 now needed from 17 as Wasik Sports got the breakthrough they needed. Pressure has to be on PAK America here and the next batsman who's due. So that big partnership of 35 comes to an end. We've seen 3 big partnerships. One at the top of the order, 77. One with Talha and Adnan Akmal at 36. And now we've seen that broken partnership between Mohammed Khalil and Adnan Akmal. 34 to win from 17. If you're Wasik Sports here, you have to try to keep strike away from Muhammad Khalil and his explosive ability to get boundaries and sixes. Ali Zar steps out to the crease over here, a very well-known hitter and somebody who can really get this team home in his own right. क्या बात ये ला है हमदा मोहब्बत एंजॉय So Ali Zar comes to the middle, 34 to win from 17 balls. On the verge of 150, we've seen the departure of Adnan Akmal, and it comes down to the Ali Zar. Ali Zar, Mohammed From Khalil, Zar Sport. and the others if they अच्छा ही come बैट्समैन, to get 34 from 17 balls. माशाल्लाह। We wish him the best of luck. Yeah, Ali Zar is Hitting known few for big his long ability to sixes, hit runs inshallah. over here. Long-time stalwart To in get New their York City team over the cricket. line. And Target it'll be interesting to see 183. if he can really get his team home here. The moment Yeah, we saw last both week batsmen, that Mohammed Khalil and Ali Zar, he target take is to ball get competition, so he's not only a cricketer, but he's also promoting the arts. Not only in hardball cricket, but tape ball cricket, which is so much alive, especially so big in Pakistan. So 34 to run from win 17 balls. 34 to win, 17.1 overs ball. It's 150 on the board. A big shot from अच्छी Ali shot, Zar, sir. so he gets हाँ हाँ हाँ, quickly चंदीप, अच्छी कोशिश। get the body behind the ball, save the boundary. Yeah, a gun fielder, you'd expect that. A little bit of an uneven bounce out there had him struggle as Zar was able to get back for the second run. But good job there of limiting the damage. And we've seen the intent here. बैट्समैन नजर नहीं आ रहा खलील भाई, सब बैट्समैन नजर नहीं आ रहे, ये वो कमेंट्री आ रही है। कौन कह रहा है? बिलाल अफजल He's साहब। done well. Chandeep has really done a lot of work on the deep. Probably they put Chandeep in the high trafficking area. And boy, नहीं has he नजर आता held up. बैट्समैन। Yeah, took a great catch earlier, made a great effort on the first Like catch one for of the Abdullah, kids. and really just shown his ability. मुआज़ के खिलाफ है पता है Ali Zar, Ali Zar, very experienced, having played at the international level. चेक करें आप चेक करें But we've seen a very good over here from Bhaskar Yadram, and it's 32 to win. Shaba from Ali Zar bhai, 14 shaba. balls. Pace on. अच्छी ही बॉलिंग के साथ, यॉर्कर के साथ, Ali Zar gone. Beautiful delivery there, really changing up his pace, getting it full, flat, and right at the stumps, not allowing Ali Zar to get comfortable with that change of pace. That's why you rely on Bhaskar Yadram and the depth to win you these games, to bring you home to the championship. So
32 to win from 13 balls. New batter comes to the middle. Mohammed Khalil stranded at the non-striker zone for the time being, Pratik. 152 for 5. Yeah, Khalil standing over there at 22 and 14 balls, imploring for the strike, begging to get back on strike so he can get his team home. Wasik Sports has done a good job of keeping him at the non-strikers and away from the ability to बड़ी गेम फंस गई है change this game. जी जबरदस्त जहां गेम तक है। आप स्कोर देखें 32 near it in 2.2 overs 14 ball left with 6 wicket in hands 13.71 run rate तो Kasim Sivia comes to the middle. 32 स्कोर अपडेट के बाद 13 में 32 And Mohammed Khalil has not faced the ball Kasim in this over. Sivaya A time in which PAK comes to the American crease. needed a couple of boundaries. He has been kept on the strike, much to the delight here of Wasik Sports. Yeah, 2 runs and a double wicket over, and you have to assume Mohammed Khalil is going to try to get the strike Score next करना over. क्या है, सही आ रहा है, Maybe जितना भी Wasik रिकॉर्ड हो Sports जाए। can pull out of the dot ball here. Pressure really gets on PAK America with 32 runs needed in the last 2 overs. And Pratik, what do you do here if Kasim Sivia can get a single? Do you run or you do not? I don't. I तेरा back बारह Khalil चौन Mohammed. The ability he's shown, 22 and 14 balls, to hit a 6 on his second delivery, to add 2 more boundaries after that. शाबाश कासम भाई टाइम नहीं है सेट करने को शाबाश Fantastic start to it. He got a wicket. देखो लंबी शॉट Was a bad bounce for Chandeep Singh, but then to just come back with dots and a wicket. incredible bowling from Chandeep Singh Sabir Yadram 2 for 19. Both of those wickets in this over. Runs into ball to Sivia. Oh, Sivia gets that single we're talking about. And Mohammed Khalil will be out of strike when the next over commences. 31 and 12. Yeah, that was a little bit of a freebie with the waist-high full toss by Bhaskar Yadav. Good job by Sevilla to work that into the offside for a single. But now PAK America need 31 in the last 12 balls. Matthew, what are your thoughts over here? I think they've got to give the advantage to Wasik Sports. 31 स्कोर 12 15 and a half and over to get Mohammed Khalil will be out of strike for at least 1 ball. शाबाश शाबाश When he does come back onto strike, it's a lot for one man to do. Kasim Sivia will probably have to join in at some point and get a boundary or 2 of his own. Yeah, thinking ahead a little bit over here. Chandeep Singh is bowling this over, so it'll be interesting to see who Wasik Sports has bowled the last over if this over goes well. Well, they've got Hamid Nawaz, who started the innings. Good bowling, He bowled Yadav. 2 overs for 12. We saw 3 for 36, expensive from Bilal Shahid. We saw Wasim Haslim, both 3 overs, 2 for 19, but would they go with a spinner? And we saw Hamar Hussain, 2 overs for 33. He was quite expensive as well. I think you bank on Chandeep Singh over here to deliver you the win. क्या ही शॉट और ये कैच आए अमान का अच्छा ही कैच वाह वाह माद भाई वाह Looking to go big, went uppish in the air. Hamar Hussain comes up with the catch. And again, with the new rules of the game, still Mohammed Khalil will be off strike. Yeah, you have to figure if that single is going to come back to bite them a little bit. Kasim did a good job of middling that ball into the large open offside, but really great coverage by Hamad Hussain as he took what was a little bit of a tougher catch. Yeah, it's been 10 balls since Mohammed Khalil last faced the delivery. And will that prove to be costly? The new man in will have to find the boundary or get Khalil back on strike as soon as possible. Yeah, I think you have to credit Wasik Sports over here for keeping the dangerous Khalil off strike. You know, allowing the new batsman to really struggle and tackle them. You know, Bhaskar Yadram did a great job in the last over, and now Chandeep Singh is doing a great job against a new batsman. एक अच्छा ही बॉलर चंदीप सिंह हा शाबा अहमद भाई शाबा So the catch by Hamad Hussain brings his brother Ahmad Hussain to the crease. ये शॉट तेरी और ये देखे कैच करने के लिए आए और कैच हो गया चंदीप हैट्रिक पे
चंदीक हैट्रिक पे, चंदीक हैट्रिक पे, वाह वाह वाह। आए जी आए, आगे भाई आगे हमारे मेहमान, मेहमान हैं जी हमारे पीर सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब, बड़ी अच्छी शख्सियत, बड़ा इनाम। जब तक हमारे नए बैट्समैन आते हैं, आगे हमारे पास मेहमान है खसूसी, बड़ा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाक अमेरिका को। गेम हार जीत अपनी जगह, लेकिन ये हैं जी पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर अहमद एंड मुदस्सर हुसैन शाह साहब सराय से डाले। न्यूज़ हो गया। अच्छा उन्हें दसो गेम फंसी इस तरह फंसी के जिस तरह आखने के तो क्या आखने हो, लेकिन जला हुआ है ना क्रिकेट उसे पता को नहीं चलना, पता को नहीं चलना कि होया क्या तो क्या नहीं होया। तो अच्छे ही बैट्समैन ज़ियाद भाई आ रहे हैं, तो मोहम्मद शकील मोहम्मद खलील जो है हमारे माशाल्लाह अच्छे ही इस टाइम वो आपसे कुछ देर के लिए उधार मांगेंगे झंडा जो हम इसमें लड़ाएंगे। गेम हार जीत अपनी जगह जी, ये जी ये हो गई पाकिस्तान। पाकिस्तान love America, we enjoy is Chandeep Singh. and we love Pakistan. Probably be looking for another Incredible reckless shot setup from here. Ziad Hussain. Alhamdulillah. 31 to win from 10. शाबाश, अच्छी शॉट के साथ, वाह वाह, और ये सिंगल निकाला जाएगा। अच्छा सिंगल ज़ियाद का, ये अच्छा ही सिंगल, ये सिंगल ओ सिंगल जो विनिंग सिंगल होगा। ये हमारे छोटे से प्यारे से। Yeah, this is the matchup now you want if you're PAK America. You want Khalil Muhammad against Chandeep Singh, who's done a great job of nailing those Yorkers, keeping the strike away from him so far. 30 needed in the last 9 deliveries, and I think the last three balls in this over might really decide this game. 9 ball 30 now. Where does Chandeep go and where does Mohammad Khalil go? 20 runs and over required, 30 from 9. 154 on the board for PAK America. शाहजमान के वाले साहब अकबर सैयद अकबर भी बड़े खुशहाल मूड में 2 मिनट में भी दे दें अंकल जी पूरा छो। अच्छे ही शख्सियत। No, he's not. लो जी जब तक अगली बॉल आती है It's a couple of runs. अंकल हम आके स्पेशल आके को का छोड़ दे। Didn't get that boundary. बेटा अगर Two runs is probably a win for अंकल जी Wazir. सामने थोड़े Yeah, I सामने think if you're Wasik Sports, you're happy with ये that. साढ़े बड़े अच्छे ही अंकल जी ने सुनी एडवाइस दी थी साड़ी इना क्या कि औकात छोड़ दियो और मैं छोड़ सकूंगा इंशाल्लाह। और सारी जिंदगी इन वास्ते दुआ कि अल्लाह ने किसी याफ्ता जिंदगी माशाल्लाह माशाल्लाह बस वादा ही समझो इंशाल्लाह। टाइम थोड़ा दे सो इंशाल्लाह स्लोली स्लोली बड़ा गुआई खाता है बहुत शुक्रिया। गुड लक तुसने बच्चे अच्छी बैटिंग की थी। शाहजमान क्या नाम पूरा सुना? For Wasik Sports. शाहजमान अकबर अच्छी बैटिंग। Is that the game? बस जिस तरह मियां जो भी कीता उस टीम में चंगा कीता। बस बेहतरीन माशाल्लाह है। तो गेम में गेम है आ दिहाड़ आज गुजरी की सोनी छुट्टी सी कल फिर वापस उत्थे ही करंडी तो उत्थे ही तेसी ते उत्थे ही वापस हां गोडियां भार बेई ते इट्टा लाओ ठीक है ना। ते नहीं शीशे का सबसे बड़ा नुकसान एक दिल पर असर फेफड़े। So Anjum Sabah, the new man in. डायरेक्ट जाना ये देख 29 from 8. सिगरेट फिल्टर लगा तो फिल्टर वाले कान Driven up, he had the outside edge. वो एक सिगरेट मिलता है ना अच्छा ही सेटअप किया गया। Anjum Sabah, we haven't really seen him a lot. डायरेक्ट Now he comes out as Molly, the captain. it's a bit The most important job, and that is to win the game for his side. 29 to win from 7. चिचिन मारा सिर्फ शो में ओ आउट गया रन आउट है बुगदार रामन चिन मारो थे बात मुसलमान के तो मेरे याश हो गया ना सही लौट गया सर या तो के बाद या फराडी नहीं वो खलील आउट रन आउट चलो मोहम्मद खलील रन आउट। और इतनी खूबसूरत है कि आपको क्रिकेट बड़ी फंसी हुई। कितना खूबसूरत अंजुम साहब का बहुत अच्छा छक्का। So defensive is Anjum Sabah. It's 29 to win from the final over. 155-29 to get from the last over. शाकीन खुश इस टाइम कि उनको पता 5 छक्के एक लेवर में। You have to think Wasik Sports is backing themselves, especially with 2 new batsmen, tailenders at the crease, who might try to really connect. बड़ी अच्छी क्रिकेट हुई आज। 29 in the last. Good ball यार। Yadram has bowled very well. That was
That's why his team came back into the By Chandeep Singh. a good cricketer and good athlete You know you need to get who was not able to give enough runs, but when it comes to bowling, dot balls with using the he has pitch, performed getting well. a change of pace. He has given a good. Fantastic stuff. Aha! Aha! आगे भाई आगे! अमाद हुसैन आगे! वाह! Comes down to the needing 29 to win from the final over. अमाद हुसैन अपनी बॉलिंग को सेट करते हुए Looks to be टक्कर होगी अमाद की और उसके भाई की. दोनों भाई हैं जी. दोनों भाई हैं. अमाद आहा ज़ियाद हुसैन तेरा कम बनता 6 छक्के मार रहा. आहा हा ये मेरे नाल पढ़े ने दोए बड़े हुए हैं इकट्ठे अच्छे अच्छे भाई हैं दोए. You know, just hit his line and length as it लो जी क्रिकेट अपनी जगह हार जीत अपनी जगह. ये टक्कर देखो जी. आहा possible here for these batsmen. well, can they do it? ये देखें Playing a छोटे भाई ने अच्छी बॉल निकाली. ब्रदर अपनी जगह लेकिन क्रिकेट के मैदान अपनी जगह. आहा हा 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 लूज. and Ziad Hussain will need हमार ने कोशिश की कि हल्की बॉल दूं बड़े भाई को. एक दो मार भी ले तो कोई बात नहीं. अमाद एक दो मारने दो भाई को यार. आहा हा अच्छे ही बैट्समैन है मार भी सकते हैं. So, Hussain versus Hussain, brother versus brother. ये The equation now is nearly impossible for PAK America as they need 28 in the last 4 deliveries, Matthew. Yep, they need 7 runs a ball, and unfortunately, there's no real way in cricket you can get 7 runs from a ball. Unless of course, Hamad Hussain does something catastrophically bad here. So, may have clipped something on the way. A direct hit would have been gone by a mile. Leg by in the end, so it's 27 to win from 3. Hamad Hussain, a job well done so far. Yeah, you have to really commend the bowling effort by Wasik Sports, especially given how a batsman like Abdullah started off the innings for PAK America. They did a great job of just getting wickets around him. 27 from 3. शॉट है भाई की. शॉट है भाई की. Really matter at this stage, it'll be a single. So, Hamad Hussain, 3 runs coming from this over, 26. अंजम भाई 2. एक छक्का. Fantastic turnout today for the Super T20 final, and we hope everybody can enjoy some good food, get a free CCL hat while you're at it as we witness this game. कोशिश पूरी लेकिन अच्छी बॉलिंग के साथ. And through it goes to Azim Haidar. वाह वाह चंदीप भी खुश. वाह अच्छी बॉलिंग के बाद रिलैक्स. On its way out once they needed 29 to win from 6, and now it comes down to them needing 26 from. Swing and a miss. Through it goes to Azim. Hamad Hussain has done it, and it is the morning champs who have reigned supreme in the afternoon. It's Wasik Sports who do it in the end, calm, composed, and you look at Chandeep Singh, Bhaskar Yadram did their job